So Suhel Seth now joining us. Suhel, you're somebody who's out there who interacts with a large number of companies, a large number of corporates, who worked a lot on branding and brand building and things like that. These are the stories that don't get brought out. We have our 24-hour news coverage on some other issues. We have papers which are going on talking about it. Cases like this which happen not just in dozens, not just in hundreds, not just in thousands, but sometimes in the hundreds of thousands. How do we come out, how do we talk about these, and how do we get active solutions to people like Lola? For one, I'd like to put my money where my mouth is, so I would like to sponsor 100 girl children every year for the next 5 years. Hi Suhel, Priyanka Second, here. Thank you so much. Hi Priyanka, how are you? Not at all. I think there are three things that need to happen, Vikram. Number one, what you and Priyanka are doing today with telethon is bringing about a huge amount of awareness, which is very important. People don't know the harm that we're doing to society as a whole by eliminating the girl child, by creating warped sex ratios, which is going to harm this country for a long, long time. Number two, I think women in power, women who are actually influencing either in media or in politics or in civil society, need to become cause ambassadors for this. Corporate India needs to play a far significant role. I'm glad that Anil Agarwal, and you remember when I spoke to Anil about this whole initiative, he was very, very upcoming and forthright about supporting this. I think with the new CSR mandate that the company's law has mandated, companies must sponsor community awareness initiatives. See, you can't change mindsets without creating an awareness. You can't create awareness without building education. So it's a three-pronged strategy: awareness, education, and then the ability to see that change impacting society. And I genuinely believe that if corporate India, through FICCI, through CII, through ASSOCHAM, and through its own initiatives, I know, for instance, Anand Mahindra and Mahindra do amazing work with the girl child. He does something called Nanni Kali. Pratham Madhav Chavan is doing amazing work for years. These are the people we need to celebrate. You all are only celebrating at times the wrong people, or we are actually taking causes which are beyond societal development and putting them right in front. I'm delighted that today, when all other news channels are scrambling to see what the courts in Goa will say about an editor, you are actually talking about a problem that afflicts all of India and that India must be ashamed of, but shamed enough to do something about it rather than forget about it tomorrow morning. Well, we're trying to make sure that they don't forget about it, Suhel. And people like you who donate so much money make such a difference to girls all across the country. I have newfound respect for you, Suhel. Thank you so much. Why newfound? You wicked girl. Asha ji, agar aap, Suhel, while you are still with us, Asha ji, corporates को क्या करना चाहिए? अगर कोई corporates देख रहे हैं इनको, अगर वो कहें कि हमें मदद करनी है, हमें सहायता पहुंचानी है, वो क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर जैसे इस केस में है, तो हमको ये हाई कोर्ट में, जैसे अभी इनका एक रिट हमने लगाया था, वहाँ पर लगाया हुआ है कि एफआर लगा दी गई थी। पुलिस ने एक फाइनल, जिसको अकॉर्डिंग टू लॉ बोला जाता है एफआर, फाइनल रिपोर्ट्स, तो उसमें ये दे दिया था कि कुछ भी नहीं है इसके केस के अंदर। तो अभी हम लोगों ने जो हाई कोर्ट में रीट लगाया था, तो उसमें ये हुआ कि नोटिस जारी हो गए हैं पुलिस के लिए कि आपने एफआर लगाया तो उसमें क्या हुआ था, फाइंडिंग रिपोर्ट्स आप देंगे, अभी उसका जवाब आना बाकी है। तो हमारा जो केस चलेगा अभी हाई कोर्ट में चलेगा और मोरेना में सेशन कोर्ट में चलेगा, तो उसके लिए एक अच्छा यदि हमको लॉयर मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इनके केस को, बिकॉज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एज ए एक्टिविस्ट तैयार करते हैं, कुछ फेलोज लॉयर्स वगैरह भी प्रयत्न के पास में, बट एक अच्छे लॉयर हमारे पास में नहीं है, तो हमको वो जरूरत है। अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वकील हैं जो देख सकते हैं, अगर आप लालो और आशा जी की मदद के लिए आ सके फॉरवर्ड, प्लीज हमें फोन कीजिए एंड वी विल पुट यू इन टच विद देम एंड इट कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस। Suhel, can I just ask you on that? So in addition to the contribution of money, like, you know, what you've just said, 100 girls you're going to send to school, that makes a big, big difference. Other than that, I'm sure people can also volunteer in other ways, going out, just spending some time going and talking in a particular community, lawyers providing assistance, giving legal support to people like Lalo. All of that can be done as well. So here's what I suggest as a solution.
You know, the problem with our country is we have a problem for every solution rather than a solution for every problem. So here's a solution. Why don't we get the Sachin pilots of the world, while they're still in government, to actually redefine the concept of corporate social responsibility? I'm a great believer that volunteerism is as important as giving money. If companies are weighed and weighted and rated on the amount of volunteerism that they encourage within their corporate structures, for instance, if a company spends 1 crore on CSR, 80% of that money must be in cash, but 20% must have monetary value of the volunteering that that corporate community has done in this area. Number one. Number two, Priyanka appealed just now to people, including lawyers. I'm a great believer that state governments must be encouraged. And I'm telling you, you have good people now running the states, whether it's a Nitish or a Naveen Patnaik or a Modi or Sukhbir Badal, Mamta Banerjee here in Calcutta. Encourage states to actually set up two things. One is a legal aid cell only for women who are deeply persecuted by their own people in order to produce boys rather than girls. And number two, encourage and engage with the judicial authorities, including the Chief Justice of India, to see that there are fast-track courts. We don't need fast-track courts for rapists alone. We need fast-track courts for murderers who are murdering babies, who are killing female fetuses. These are people who are equally reprehensible as far as society is concerned. I absolutely agree with you that, you know, अभी आशा जी और हमारी यही बात हो रही थी कि एक तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम लोगों के लिए, एंड मैं ये पूछना चाहूँगी आम लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, हम अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट कैसे दिखा सकते हैं आपके हिसाब से? आप इस to my mind, you can show your involvement in two ways. Number one, in the way you're doing it today. You know, you are someone from the film industry. You are someone who's done more than just act. The fact that you're endorsing this cause is good enough. But more importantly, in many ways, there are many Priyanka Chopras who must have been killed at birth. If they were born, they would have created a difference. So we need to celebrate the Indian woman. We need to celebrate the Indian girl. We need to celebrate the achievements of Indian women. We've had a whole history of them. But that mindset, Priyanka, will only happen if you educate people, if you make people realize the value of the girl child, and if you make people realize that they are nothing but callous murderers when they indulge in female infanticide. That's the only way. It will take long, but to begin the process is as important as to endure with it. Absolutely. Thank you so much, Suhel. Suhel, thanks a lot. And 100 girls, Suhel, 100 girls you have said you're going to be educating, and that really is going to make a difference. Thank you so much, Suhel, for joining us and for that. आशा जी, पर एक सवाल है, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं और मैं भी जिंदगी भर यही सोचता था कि जब एजुकेशन बढ़ेगा, खासतौर वुमेन्स एजुकेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इन किस्म की चीजें कम हो जाएंगी, कन्या भ्रूण हत्या कम हो जाएगा। पर ये हुआ नहीं है। जब अगर आप देखेंगे जो स्टेट्स हैं जहां एजुकेशन ज्यादा है, वहां ज्यादा होता है ऐसी इंसिडेंट्स। अब एजुकेशन बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। बहुत से मेरे ऐसे केसेस हमारे पास में काउंसलिंग के आते हैं, जो लॉयर हैं, जजेस हैं, मतलब एक दो केसेस वायलेंस के, जो डोमेस्टिक वायलेंस है। मैं खुद एजुकेटेड हूँ। यदि आप बोलेंगे कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं लॉयर हूँ, बट मेरे साथ में भी ये सब हो चुका है कि मैं इस मेंटली डिस्टर्ब इतना शादी के बाद में हो चुकी थी। तो एजुकेशन मायने नहीं रखता। कई स्टेट हैं जो मतलब एजुकेशन के, पंजाब, हरियाणा, गुजरात को आप मानिए, गुजरात का आप मैशाना जितना बात करते हैं तो उसमें भी डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान को एक चीज मान सकते हैं कि डोमिनेटिक है, लेकिन पंजाब, हरियाणा तो हर चीज़ में, मनी पावर्स में भी है, आपका एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप अब्रॉड में जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो फिर कैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं? एक माइंडसेट की बात, माइंडसेट की जो बात जैसे हमारे कल्चर में हमको कब से सिखाया गया है कि वंश आगे तभी बढ़ता है जब आपके पास लड़का हो। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के अच्छे नहीं होते बेचारे, बट उसका ये मतलब नहीं कि हम ये सोचने लगें कि बेटी की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे गांव ऐसे हैं जहां लड़कियां हैं ही नहीं शादी के लिए। अब इतनी कम लड़कियां, हम ये पहले जब हम जाकर उनसे बात करते थे, कैन यू बिलीव, वो ये बोलते थे, बहन जी आप तो यहाँ काम कर भी आ गई हैं, मोड़ा नहीं होगा तो कहा हमारी तो नाट है जाएगी। मीन्स नाट ये हो जाएगी कि वंश नहीं होगा।
हमें जब तक इज्जत की बात होती है, इज्जत क्या। और दूसरा आप जो पूछ रहे थे, मैं जहाँ तक अभी तक एजुकेशन नहीं, लेकिन आप जहाँ अर्न करते हैं, पैसा आपके हाथ में कमाने लगते हैं, तो एक डिसीजन, जहाँ डिसीजन मेकिंग में महिला आ जाती है, तो बहुत सा डिसीजन वो अपने फेवर में लेना पसंद करती है। ओके आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं, लेटर इन द डे आपको फिर से बुलाएंगे, एक दो और सवाल शायद आपसे जरूर करेंगे। प्रियंका, लालू जी, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आपके लिए हमारा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है। शुक्रिया कि आपके लिए भी और आपके लिए भी, जब आपने इनकी सहायता इतनी करी। आपके जैसे बहुत से और भाई होने चाहिए जो मदद करें, जो इज्जत करे लड़की की। ऑलराइट।